सर राइट साइड मारना लोग पीछे सामान ये पीछे परमानेंट What she told you the last 7:20. And thank you all for coming. So this is the Grand Trunk Show by the Big Door, and we have fantastic designers who are participating with us in this show. We have Gaurav from Jaipur who's doing beautiful heritage fortunes, and we have Arshila here who does beautiful outfits, even the one what he is wearing. Yeah. And we have Rohit's menswear, which is on heritage lines. Unfortunately, he's delayed a little, so he should be here any moment. And I hope you guys please enjoy the evening, and I hope you all like it to be here. And we wish that your whatever you'll be carrying now from now on will help us get the right audience to this talk. Now, TV channels, if you want to take bites, you're most welcome to do that. Arun, what about the showcasing of each and everything else? bye. Follow me, Jabal. एक मिनट राजा एक मिनट हो गया तो चलो ये सुनो ना शेयर के साथ अली बाबा पीछे से कौन पासिंग करा रहे हैं पासिंग कौन जूनियर आर्टिस्ट देते हैं यूनियन को बुला के यूनियन को बुला के झगड़ा कर एक भी शर्ट में ना पैंट करके धक्का मार देते ये स्टील वाले ना
नीचे से निकल चल, निकल नीचे। थोड़ा इधर शूट हो गया तो इधर से देखो, कहीं पर जाम मिले तो अच्छा था। हाँ ठीक है, देख लो वैसा नहीं। No, because Gaurav was holding as a बस 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 I am the one who's gifted, not you want to try your luck? अरे अभी आएंगे आपका हुक्म है तो सब आएंगे लॉन्ग मैं आपको बता दूं ना Sure. ट्रेनिंग पे पीछे पीछे उसके लिए आके सब करना।
और look over here. Thank you. Excuse me, you. Ellie, right? मैं आपको मिलता हूँ, मैं एक ही चीज़ आपसे कहता हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, लेकिन आज जो आपने आप डिज़ाइंस पहने उसके बारे में कुछ बताइए। Yes, today I'm wearing this lovely outfit, as you can see, lovely colors from, sorry, how do I pronounce? Takshila. I don't want to pronounce it wrong, Takshila. I am wearing her lovely outfit, as I said, and I feel it's very, it really has that royal look in it, because of the color, the handwork that you can see. So yeah. घड़ियों से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया आपको लग रहा है? मतलब? आपके watches, you love watches, you love wearing watches. Yeah, I love wearing watches, and I got to wear this lovely one. So yeah, it's very nice. रॉयल्टी की आपने बात की, आपने कहा कि रॉयल लुक लग रहा है आपके जो भी डिज़ाइंस हैं, तो बॉलीवुड में ऐसी कोई एक एक्टर और एक एक्ट्रेस जो आपको लगे कि हाँ रॉयल हैं वो? Yeah, royal as an actor, I will definitely say Amitabh Bachchan. He really has a very royal look. And actress, I would say Madhuri ji. एंड सलमान? आपको ये नहीं लगता कि सलमान रॉयल है? Salman तो is very good looking. Yeah. सेंटर लुक मैम। But royal, I would say like Amitabh Bachchan has a very royal look. ओके, कलेक्शंस की बात करते हैं हम यहाँ पे। आपने यहाँ पे सभी कलेक्शंस देखे, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स हों या फिर वॉचेस के कलेक्शन हो या फिर इतने सारे बेहतरीन डिज़ाइंस के कलेक्शंस हो, क्या कहेंगे आज की शाम के बारे में और इन सभी कलेक्शंस के बारे में? मैं क्या कहूँगी? Well, it's very lovely to see all these outfits here. All the furniture, the jewelries here. It really has a royal look, and it's very authentic. It's very beautiful. I really love it. शाम की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि जितनी भी औरतें होती हैं उन्हें कपड़ों से और ज्वेलरी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आज आप शाम को यहाँ से कुछ लेके जाने वाली हैं एज अ गिफ्ट या कुछ और? Honestly speaking, there's this. I've been here earlier in the store because we were shooting in here, in fact. And there's this one elephant in the store which is like very nice. कहाँ है वो वाला elephant? वो नीचे नीचे नहीं है एक्चुअली, मुझे लगता है कि यहाँ पे ऊपर है. इट्स अ ब्यूटीफुल एलिफेंट जो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि वो राजस्थानी से है. And it really has this royal authentic look, very like a traditional. And I don't know, like last time जब मैंने यहाँ पे थी ना तो मैंने वो एलिफेंट को देखा और मैंने एकदम ऐसे मतलब बोला कि यार कुछ स्पेशल है with that one. I really want to like have it, so let's see. And they have some lovely jewelry also, which I'm like thinking कि अगर शायद मैं खरीदूंगी या नहीं, देखते हैं. But does really the price also matters sometimes? Like some things are they? How do you balance yourself with the budget? Or maybe something? Yeah. As you said, खरीदूं या ना खरीदूं? Obviously वो तो है,
I mean, वो मुझे लगता है कि that is there with everyone. You obviously have to see how is your economy and all. लेकिन जब कुछ when it's for example like there is this one piece only, then I always tend to feel कि अगर मैंने कुछ ऐसी feel किया कि yes I really want to have this one and I really like it, then I tend to buy it because it's like सिर्फ एक ही है और वो सिर्फ मेरा है। आपका एलिफेंट भी आ गया है यहाँ पर जो पीछे है। आ गया? हाँ, there it is. I know. ये राजस्थानी से है ना? ये राजस्थानी से है, ये राजस्थान से है। ये राजस्थान से है, sorry. It's a very old piece and it's Yeah. got actually 24 karat gold work Yeah, on on it. it, है ना? Yeah. Yeah. तो हम ये समझे कि आज ये एली के लिए एक गिफ्ट होगा। एली के लिए सब ये स्टोर गिफ्ट है। अब आप और क्या क्या, बहुत सुंदर घड़ी, बहुत सुंदर हाथी, बहुत सुंदर। So Ellie is anyway a gift to Mumbai. So that is what I feel, that she's gift to Mumbai right now. Everybody is looking at her. सर मुंबई की बात भी बॉलीवुड में एली एक गिफ्ट बंद कराएं क्योंकि हमने ये भी सुना कि नो एंट्री में आपकी एंट्री होने वाली है। ओहो, अच्छा, ऐसे like that. Let's talk about this elephant instead. I really like it. It's very cute. There are some news, तो प्लीज आप बता दीजिए कि आपकी नो एंट्री में एंट्री हुई है क्या? You can just say yes or no. What do you want me to answer? Yes. Now, what are the factors in fact? Like, are you doing that film? In fact? Are you doing it? No, not as far as I know. And so what are the other projects? What projects having? Like, what are the projects what you're doing in fact? Such है कि right now I've been very busy with like taking acting classes and working on my Hindi and dance skills and all that. So, but soon some announcements gonna come. And is Salman supporting you? In fact, like he's always been supporting a new person who's come. There are lots of heroines who have come through his support too. Has he promised you anything like that? Like would be supporting to get you a role, or maybe in his production, any kind of sort of a thing, or any talks going on? क्योंकि सलमान ने हमारे सामने ये सब चीज़ें बहुत बार कही। अच्छा। So आपके उनसे इस बारे में कोई कन्वर्सेशन हुई है या नहीं, ये जानना चाहते हैं। So you know कि he has been always as a helping hand. Like he's always there to promote new talent. Whatever you say about him. Personally, what I can say is that I feel he was really helping me a lot when I was inside Big Boss house. He was really like talking good about me and really supporting me a lot, which I'm very grateful to. And yeah, I feel he is a very supportive person, So yeah. उसके बाद, are you in touch with him? Like in fact, regarding yeah. No comments. I don't know what to. ओके एली, आपसे ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है कि आपके बारे में बहुत सारी खबरें आती है कि आप सलमान के साथ फिल्म कर रहे हैं, आपकी नो एंट्री में एंट्री हो रही है, बट जब आपसे ये सब पूछा जाता है आप एकदम अवॉइड करने लग जाते हैं ये सब क्वेश्चंस को, क्यों? जैसे ही सलमान का नाम आता है आप हर एक क्वेश्चन को अवॉइड करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है ये। Well, I guess क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या जवाब दे दूँगी, क्योंकि सचमुच है कि मुझे लगता है कि आप मीडिया लोग ना, you guys like tend to know things like better than I personally do. So yeah. सो हमें लास्टली आपसे पूछना चाहूँगा, हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन तो आ ही चुकी है, मीडिया रिपोर्ट्स में कंफर्मेशन आ चुकी है कि आप नो एंट्री में एंट्री करेंगे, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं कह रही हैं? क्योंकि I don't know about that. Okay. आज की शाम के लिए बस थैंक यू सो मच। Thanks a lot. All the best. Hope to see you. No What entry. to say? Anything. In no entry. आप हमेशा मतलब
फक्त समोर बघा. सर इकडे. साहेब समोर समोर. मधुर साहेब समोर बघा समोर. सर इकडे. सर. मधुर साहेब. थँक्यू सर. सर समोर आहे समोर. सर यहाँ पे राइट. बोथ ऑफ यू राइट. वन मोर सेंटर. सर बोथ ऑफ यू राइट. Thank you. A big celebrity at the big door. Thank you very much for coming. नहीं यार फ्रेंड यार इस साइड में सच में जाके आके जा रहा हूँ 100%. लेकिन अभी आपको बहुत मजा आएगा. This is वेरी एथनिक वेरी अच्छा लगे अरे वाह. Pure silver. हाँ जी, rosewood and silver. This is the fantastic. Madhur ji, my partner. का भक्त हूँ तो गणेश जी का जो कार्विंग है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा है. तो ज्वेलरी भी अच्छी है और गरुड़ा जी भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे ख्याल से पहली बार एक एथनिक राजस्थानी टच है इसमें और बहुत ही कमाल का है. कहा जा सकता है कि यहाँ पे कलेक्टर्स जो भी कलेक्शंस कलेक्ट करते हैं, कलेक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा स्टोर माना जाता है ये. तो आप किसी चीज़ के कलेक्टर हैं? वेल मैं तो सच्ची बोलूँ तो मैं बहुत डीवीडी का कलेक्टर हूँ क्योंकि मैं डीवीडीज़ बहुत डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म्स जो होती है वो काफ़ी है. और घर में जैसे गणेश जी है वो तो डेफिनेटली हम लोग रखते हैं. और मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है ज़्यादा, मैंने कलेक्शन से ज़्यादा मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, किताबें पढ़ने का शौक़ है, डीवीडी कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है. मेरे ख्याल से मेरे पास जितनी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं किसी के पास नहीं होगी. जिस तरह की पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज है वो कमाल की है. तो वो सब चीज़ें हैं मेरे पास. मधुर जी आखिरी 2 सवाल मेरे. अगर यहाँ से आपको कुछ कलेक्शंस उठा के लेके जाने हो, जो लेके जाने हो, आपको खरीदना हो तो आप कौन सा होगा वो? कुछ लेके जाना है तो मैं डेफिनेटली गणेश जी. मेरे ख्याल से वो उनका आशीर्वाद उनका प्यार हमेशा रहा है मेरे प्रति. सिद्धिविनायक चल के जाता हूँ मैं, आज भी 17 साल से चल के जाता हूँ तो एक आस्था है. तो गणेश जी डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो भी हो मेरी पोजीशन है इंडस्ट्री में वो गणेश जी की कृपा है. सर जी मैडम जी क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए मैडम जी जो है अभी स्क्रिप्टिंग लेवल पे है, बहुत जल्दी आपको उसके बारे में बताया जाएगा. स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, उससे पहले और एक पिक्चर में शुरू करने के कगार पे हूँ. आपको बता देंगे. अभी स्क्रिप्टिंग चालू है, जल्दी उसकी घोषणा करूँगा मैं. बात स्टार्ट क्यों रहे हो? You've also come out and you recently tweeted about let's hope the film industry has a better sense and all about Modi and all of that. Are you a big supporter of Narendra Modi? See, first thing I'll tell you कि it was just what I felt it I did. My heart felt it which I did. I felt it the whole controversy and the whole signature campaign against Mr. Narendra Modi was uncalled because first of all there was nobody who came with a propaganda or a agenda in the film industry ke okay go and vote for Modi or go and vote for BJP. Nobody came. Industry is a very secular, very strong. There's a lot of intimation, togetherness in the industry, and suddenly my colleagues they come out with a memorandum, they come up with the signature campaign ke don't vote for the Modi things. So and they said vote for a secular. So I would like to know ki who are the secular party they are referring to, because I just felt it ki one thing ki there was nothing. I can understand ki there was some people in the industry who wanted ki pro Modi campaign and they would to say the industry people vote for Modi. It was not like that. So if then I understand the campaign from your side also would have come for a counter, but there was never such thing. So why all of a sudden this thing? And let the people decide, let the film industry people decide, let the industry know exactly whom they want to vote. Every industry people must be, they are pro Modi, they would be anti Modi, everything it is like that. In every camp it is like that, and everybody and in the country is like that. So let people go with this flow and let people vote for you. Why you wanted to break up this issue? Why you came with this signature campaign against this, ki don't vote for this party or this party? It's really uncalled. Are you supporting Modi? See, what I'm telling you here, I felt it the whole thing from so many days. See, I'm a very apolitical person.
I have relation across party lines, from Congress to BJP to MNS to Shiv Sena to NCP. Everybody, my relations are very nice because I feel I am a creative filmmaker, and people in the film industry, everybody like our work. It can from all party people like my work. They appreciated my work. I got some fantastic national awards for my movie. So I just felt it. This whole controversy came uncalled, and that was the reason I came with this thing. कि if you try to divide Bollywood by these kind of memorandum and signature campaign, so definitely there would be some voices who will be pro Modi, who will come in support of it. So I just felt it. कि gone. I've been to Ahmedabad a lot of time. I know so many Muslim friends of mine. I know so many Muslim friends who are doing business in Ahmedabad, Surat and Baroda, whose business is flourishing. Their turnover is superb. And they are all going to vote for Modi. So there's nothing wrong in it. If I keep my point of view, I just feel that the development is great over there. He has done a fab job. And I think that man deserves a chance about it. And that's how like I said, I'm absolutely not belonging to any political party. I don't have affiliation to any party. As for individual, yeah, I just felt it कि he has done a great job, which I've seen. It's not कि somebody tell me a fairy tale. I've seen over there in that city. And I feel he has done a good job. And it can be a nice thing. He has a lot of, in his manifesto, a lot of things are there, which is pro-development, only pro-development I'm talking about. So I feel that we should all support, and I just came. Had it been not this campaign, it wouldn't be from my colleagues, I would have still not said, because I never tweeted or never said anything like that, because like I said, I have friends across all political party, and I've attended so many political parties function, irrelevantly from which party they belongs to. तो मधुर जी, आप लास्टली आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है मोदी को चांस मिलना चाहिए? मैंने कहा आपको भी। अच्छा मधुर, अगर हम फिर से अगर हम कैलेंडर गर्ल की अगर बात करेंगे ना फिर से यार। चलो, थैंक यू। I should also be allowed नितेश, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा सोचा।